Hey guys, welcome back to the part 4 of the Pulsar 180 rebuild। इसमें काफी टाइम लग गया उसके लिए, पहले सॉरी। और अभी इस बाइक में जो पेंट पॉलिशिंग है उसका काम करना है, उसके बाद स्टिकर इंस्टॉल करने हैं और बाकी की बातें बाद में करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पॉलिशिंग का काम करना है, इसलिए मैं इन दोनों सीट्स को रिमूव कर लेता हूँ बिकॉज जो कंपाउंड है वो फिर इनका जो फैब्रिक है उसको डैमेज कर देगा। और अभी जो इधर ये डस्ट वगैरह लगी हुई है इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे बिकॉज अदरवाइज वो कंपाउंड के साथ मिक्स होकर पेंट को और ज़्यादा डैमेज कर देगी। और जो कंपाउंड है वो 2K रबिंग कंपाउंड है और जो पैड मैंने काम में लिया था वो सबसे सॉफ्ट वाला था। जो सरफेस शाइन है वो आ गई है और इस पेंट को खाली सील करना है। अभी के लिए बस यही इसका टारगेट है। सो अभी जो वाइजर है उसके ऊपर करना है बिकॉज विंडशील्ड और हेडलाइट हम रिप्लेस करने वाले हैं। और जो मड गार्ड है उस पर काफी सारे स्क्रैचेस आ गए हैं। ये डीप स्क्रैचेस हैं, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ ओवरऑल जो शाइन है वो वापस आ सकती है। अभी के लिए हम सिर्फ उसी पर काम कर रहे हैं।
ऑलराइट, सो अभी स्टिकर्स और जो ग्राफिक्स हैं उन पर मूव ऑन करते हैं। तो ये जो इसका डिकल है, जो 3D लोगो आता है इसका, उसके लिए ये टेम्पलेट दिया हुआ है। इसको पहले इस पे स्टिक करेंगे और उसके बाद जो ये लोगो है इसको इसमें प्लेस करना है। जब इनको लेके आया था तब मैं खुद सोच रहा था कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो इक्वल कैसे करूँगा, बट थैंक्स टू देम दे गिव द टेम्पलेट, तो अभी काम थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे तो स्टिकर्स हम लोग लेके आए वो पल्सर 150 के हैं। अभी इनको 180 में कन्वर्ट करना है, एज यू कैन सी दोनों साइड करने हैं। उसके बाद बाकी के स्टिकर इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। सो दैट्स अबाउट द पल्सर 180 रिबिल्ड। अभी इसको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। बाइक कंप्लीटली न्यू जैसी कंडीशन में हो गई है। अभी एक खाली ब्रेक लीवर बचा है और एक टैंक पैड बचा है, वो लगते नहीं है। उसके अलावा जो बाकी का काम है वो कंप्लीटली डन हो चुका है। अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, शी इज गोइंग। अभी जो इसमें टोटल कॉस्टिंग आई है वो अराउंड 18 से 20 हजार रुपए के पार्ट्स लग गए इसमें। और इसकी जो पेंट जॉब है, जो सिल्वर पार्ट्स ब्लैक किए थे और जो रीपेंट का काम हुआ था
उसके लगभग 5,000 के समथिंग लग गए। सो अराउंड अबाउट 25,000 के समथिंग इस बाइक को पूरा रिबिल्ड करने का कॉस्ट आया है। और उसके अलावा इसकी जो कलर स्कीम है वो पल्सर 150 का जो कार्बन एडिशन आता है उसके स्टिकर्स हैं। और इसको मैंने कैसे प्रिपेयर किया है और इसका रिबिल्ड से पहले का जो डिसमेंटलिंग का पार्ट था और उसका इंजन रिबिल्ड का पार्ट था, अगर वो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। That's about the part 4 and the final part. So पल्सर 180 होता है यहीं पे फिनिश और अभी चल रही है ड्यूक 390 की रिबिल्ड चैनल पे। सो मेक श्योर आप उसको चेकआउट करें। और अगर ऐसी बिल्ड से आपको कनेक्ट रहना है, कुछ सीखना है एंटरटेनमेंट के साथ साथ, सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल। Until the next time, it's me saying bye.